Hello guys, I'm Shubham from ShubhVed Tutorials. This video is about glycosylation. This is the part 3 of endoplasmic reticulum we are going to see. Okay, so before we start, subscribe to the channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from our side, but it will help us grow. So glycosylation is basically what? Addition of carbohydrate chain to a protein. Okay, to a protein. कार्बोहाइड्रेट चेन का एडिशन होता है. So this carbohydrate chain is first formed. Okay, this is first formed and then this goes to the protein. Right? So ये जो process है, this is called N block transfer of carbohydrate chain to a protein. Got it? N block means what? First this chain is formed and then that is added to a protein. ओके अभी इसमें ग्लाइकोसिलेशन मींस इसमें 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन एंड ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन. ओके एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड. एन होता है ईआर में, ओ लिंक्ड occurs in Golgi, right, which is the next organelle that we will be studying. So how to remember this? जो order है ना, that you have to remember, like E, F, G and M, N, O. Okay, this order ऐसे ही हमें याद रखना है, right? First E comes and first N comes. Okay, so E is related to ER. ER में होता है N link glycosylation, right? Then comes Golgi. After E comes Golgi. So G for Golgi and O means O-linked. This is how you can remember, right? Based on the order of alphabets. E, F, G, M, N, O. First E comes, also first N comes. Then G comes and O comes. Okay, this you have to remember because यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं. Now let's go to the actual process. This whole thing, this is a glycosylation. Okay, part carbohydrate part है, इसमें 2 NAGs है, N-acetyl glucosamine. Then there are 9 mannose, right? 9 mannose and 3 glucose units. Okay, this is a carbohydrate chain that is basically added to a protein. अब ये प्रोटीन में जब ऐड होती है, we saw this is N linked. N means this is amino, right? So this gets added to the NH, okay, of the asparagine side chain, right? NH वो ऐड होती है. Okay, all these things which I am telling you, you have to remember. That is called N linked. Basically, that is N of asparagine, right? Asparagine, ASN. Okay, you can see here. यहाँ पे हमें दिख रहा है exactly डोलिकॉल. ये लिपिड मोइटी है, लिपिड मॉलिक्यूल जिस पर फर्स्ट दिस चेन फॉर्म्स हियर. लिपिड लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड एंकर्ड इन ER मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट डोलिकॉल पर ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, पूरा जो चेन है, and then this gets added to asparagine side chain of a protein. Okay, this is a translocating protein with N glycosylation site. The enzyme responsible for this addition is oligosaccharyl transferase. Okay, oligosaccharyl means what? Saccharide जो चेन है, ये शुगर चेन, कार्बोहाइड्रेट चेन, उसका ट्रांसफर करेगा टू अ प्रोटीन. Okay, this is what you can understand from the name. Oligo means what? Multiple units. Let's see what is written here. N linked
protein glycosylation in the ER almost as soon as polypeptide chain enters the ER lumen. It is glycosylated on target asparagine amino acid, right? The precursor oligosaccharide shown in colors attach only to asparagine side chain in the sequence. See, ये sequence भी important है. I will highlight this. Asparagine X serine and asparagine X threonine, where X is any amino acid, right? Except proline. Proline नहीं चाहिए. These sequences occur much less frequently in glycoprotein than in non-glycosylated cytosolic protein. Okay, मतलब this sequence इतने ज़्यादा नहीं दिखते. They are not common. Is seen in glycoprotein than in non-glycosylated cytosolic protein. Evidently, there have been selective pressure against these sequences during protein evolution, presumably because glycosylation at inappropriate sites would interfere with protein folding. प्रोटीन फोल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है of glycosylation. We will see that as we will go further. The 5 sugars in the gray box form the core region of the oligosaccharide. See this, जो ये मार्क किया है ग्रे से, that is important. You can see here. This one. 2 NAG and 3 mannose. Right. This form a core. These are very important. For many glycoprotein, only the core sugars survive the extensive oligosaccharide trimming that takes place in the Golgi apparatus. Okay, मतलब Golgi में modification होता है इसमें. So this इसका modification नहीं होता. This remain as it is. Right, the core remain as it is. That will be seen in the Golgi videos. The precursor oligosaccharide is transferred from a dolicol lipid anchor to the asparagine as an intact unit in a reaction catalyzed by a transmembrane. Okay, transmembrane means plasma membrane में inserted है protein enzyme, basically oligosaccharide transferase enzyme complex, right? One copy of this enzyme is associated with each protein translocator, right? You can see ये protein translocator के साथ linked है, joined है, one subunit. In the ER membrane, oligosaccharide transmembrane contain 13 transmembrane alpha helices, right? And a large ER luminal domain. Okay, see, ये जो है, this whole thing ER luminal domain में आता है, which is having a active site basically, right? That contains binding site for the nascent protein and dolicol oligosaccharide. Okay, the asparagine binds a tunnel that penetrates the enzyme interior. Okay, there the amino group of asparagine, जो NH है, this one which I have marked, is twisted out of the plane. See, ऐसे बाहर आया है इसमें. The second picture, B picture, that stabilizes the otherwise poorly reactive amide bond. Okay, that is for the stabilization. And that activates it. मतलब क्या, asparagine को उसने pull किया है उसकी तरफ, right? So that it becomes active. Otherwise वो inaccessible होता. Okay, activating it for reaction with dolicol oligosaccharide. Okay. Now this is the exact process of synthesis of this carbohydrate moiety. अच्छे से समझना है, right? So this is a lipid bilayer of ER membrane. यहाँ पे lumen side है and यहाँ पे cytosol side है. So first reactions occur in cytosol. Okay, अभी ये जो dolicol molecule है, ये ऐसे membrane में inserted है. Okay, dolicol is what? This is a lipid molecule, right? Anchor, basically इसे कहा है. Anchor means what? Which will do the joining of carbohydrate molecule. So first dolicol का होता है phosphorylation.
right? Phosphorylation, you can see here, phosphorylation. So this phosphate group is coming from CTP first. Okay, one phosphate group. CDP released, one phosphate group enter. Next, auric phosphate. Auric phosphate हमें चाहिए. This is coming from the, you can see here यहाँ पे N acetyl glucosamine है and 2 UDPs are there. Okay, 2 UDPs हैं. So glycosamine, N acetyl glycosamine add होगा with a one phosphate, right? You can see UDP and UMP is getting out. So 2 molecules of UDP ना, मतलब UDP 2 है, right? So this is a 1 and this is a 2. तो ये एज इट इज निकल गया एंड इसका एक फॉस्फेट अंदर आया और बाकी यूएमपी एज अ रिलीज हुआ. ओके, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. So this is now having a one sugar molecule, N-acetyl glucosamine. Okay, then phosphorylation अभी यहाँ पे नहीं होगा. अभी next जो है molecule that we want. Okay, so basically ये 2 UDP नहीं है सिर्फ, this is having NAG also, N-acetyl glucosamine वो भी है यहाँ पे, right? 2 ADP के साथ. You can see here this is a unit, right? So after getting add, you can see here यहाँ पे 2 molecules है ना NAG के. I will erase this. This, okay, 2 molecules of NAG are there. Next, mannose add होगा अभी, 5 mannose here with the help of GDP, right? GDP सिर्फ as a carrier we can say it is acting, right? Because release हुआ है as it is. Mannose has got added here. ये 5 mannose. अभी इसके बाद क्या होगा? Carefully see. After this thing, this you have to remember. First step, 2 NAG and mannose are 5. ये ऐड होने के बाद यहाँ पे फ्लिपिंग होता है, ओके, ऑफ दिस होल मॉलिक्यूल, राइट? यहाँ तक पूरा सब कुछ साइटोसोलिक साइड पर ऐड हो रहा था. नाउ दिस गेट्स फ्लिप्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड लुमिनल साइड पर अभी ऐड होगा. ओके, फर्दर और एक चीज है यहाँ पे, अभी तक डायरेक्ट ऐड होता था, इसके बाद और डॉलिकॉल मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट डॉलिकॉल पर ऐड होगा हियर. जो पूरा जो प्रोसेस है आफ्टर कंप्लीशन दैट इज हैविंग व्हाट 2 NAG, 9 mannose, 3 ग्लूकोज, राइट? और अभी तक हमारा 5 mannose ऐड हुआ है. अभी क्या होगा? अगेन डॉलिकॉल फॉस्फेट है यहाँ पे, राइट? डॉलिकॉल फॉस्फेट 4 mannose getting added. ओके, 4 mannose ऐड हो रहा है. Here it is written mannose donor made from डॉलिकॉल फॉस्फेट. ओके, जो mannose donor है अभी यहाँ पे जो बनाया है that is made from डॉलिकॉल फॉस्फेट को यूज किया है as well as GDP mannose यहाँ पे यूज किया है. ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो यहाँ पे 4 mannose ऐड हो जाएंगे एंड द टोटल यहाँ पे अभी 9 mannose we can see, right? I will highlight this again. You have to note this. Okay, then what happens? The last thing, ग्लूकोज आप ऐड करना है, 3 molecules of glucose. तो ये भी 3 times, 3x means 3 times ग्लूकोज ऐड होगा. सेम लाइक द प्रीवियस स्टेप, ग्लूकोज डोनर is used made from डॉलिकॉल फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज. ओके, मैनोस के टाइम पर जीडीपी यूज हो रहा है, राइट? मैनोस के टाइम पर एंड ग्लूकोज के टाइम पर यूडीपी. गॉट इट? जस्ट रिमेंबर, एज वेल एज
एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के वक्त भी UDP इज यूज्ड. ओके, so this is the whole process and you can see here पूरा ग्लाइकोलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. तो here डोलिकॉल है with 2 molecules of phosphate, right, and then NAG is there and acetyl glucosamine 2 molecules and mannose 5 molecules and glucose 2 molecules. Okay, let's see now what they have written. Synthesis of the lipid link precursor oligosaccharide in the rough ER membrane, right? The oligosaccharide is assembled sugar by sugar. Okay, one by one sugar add हो रहा है onto the carrier lipid dolicol, a polyisoprenoid. So this is also very important, you have to remember. So dolicol a carrier है, as I said, but it is a isoprene. Isoprenoid मतलब isoprene का है, right? Dolicol is long and very hydrophobic. Okay, lipid है, hydrophobic होगा. Its 22 5 carbon units can span the thickness of lipid bilayer more than 3 times. Okay, 3 times span कर सकता है lipid bilayer को, means plasma membrane को. I will highlight this. जो 5 carbon के molecule, isoprene means what? 5 carbon. So there are total 22 carbon. Okay, 22 5 carbon units. So if I calculate, this goes to almost 5 2s are 10, 110 carbon, I guess. Okay, so 22 5 carbon units are there which span the lipid bilayer more than 3 times, so that the attached oligosaccharide is firmly anchored in the membrane. मतलब firmly means strongly it is attached to the membrane, right? Toughness चाहिए. The first sugar is linked to a dolicol by a pyrophosphate bridge. Yes, we saw the high energy bond activates oligosaccharide for its eventual transfer from the lipid to an asparagine side chain. Right, मतलब ये जो high energy bond form हो रहा है इसकी वजह से ट्रांसफर हो सकता है फॉर प्रोटीन, राइट, एस्पराजिन साइड चेन के साथ of a growing polypeptide on the luminal side of the rough ER. Okay, rough ER basically is related to protein synthesis. As indicated, the synthesis of the oligosaccharide starts on cytosolic side of the ER membrane. हमने देखा, ये डिस्कस किया, फर्स्ट साइटोसोलिक साइड में होता है सब कुछ सिंथेसिस till the 2 NAG and 5 mannose, right, important है, and continues on the luminal phase after this, right, mannose 5 and N-acetyl glucosamine 2 molecule. Lipid intermediate is flipped across the bilayer by a transporter which is not shown. Okay, important है, ट्रांसफर flipping कैसे होता है, by a transporter. So I will highlight this because the transporter is not shown. Okay, all the subsequent glycosyl transfer reaction on the luminal side of the ER involve transfers from dolicol P glucose, right, and dolicol P mannose जो हमने देखा. These activated lipid linked monosaccharides are synthesized from dolicol phosphate and UDP glucose और GDP mannose. मतलब अलग dolicol यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, डायरेक्ट नहीं हो रहा इन द luminal side. So UDP glucose and GDP mannose are used as well as dolicol phosphate is used extra on the cytosolic side of the ER and are then flipped across the ER membrane. तो यहाँ पे क्या क्या चलता है, फ्लिपिंग कंटिन्यूसली चलता है एज यू मेंशन. ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं ना यहाँ पे डोलिकॉल, दिस वन एंड दिस वन, इन पे जो एडिशन होता है ना वो साइटोसोलिक साइड पर होता है एंड दे आर फ्लिप्ड इनसाइड. गॉट इट, दैट इज द केस, दैट इज रिटन हियर कि
I will erase this again and I will read this again so that it is much clear. यहाँ तक समझा है प्रॉपरली? यूडीपी ग्लूकोज और जीडीपी मैनोज यूज कर रहा है एंड डोलिकॉल फॉस्फेट इज यूज एज अप्रोप्रिएट ऑन द साइटोसोलिक साइड सीरीज ऑफ द ईआर, मतलब साइटोसोलिक साइड पर आ रहा हुआ एंड आर फ्लिप्ड अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन. गॉट इट? मतलब ये फ्लिप्ड होगा अंदर के साइड पर. गॉट इट? फर्स्ट एडिशन and then it is flipped inside, then gets attached to this original molecule, and then the glycosylation is completed. Got it? Now the role of glycosylation in protein folding, right? Very important. अभी glycosylation तो हुआ है. You can see here, ये unfolded protein है. इस पर precursor oligosaccharide है. These are the three glucose molecules you can see. Okay. अभी यहाँ पे क्या हुआ? Glucose streaming. Glucose streaming, basically two molecules of glucose are released out. एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है. अभी ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कैलनेक्सिन के साथ बाइंड होता है, राइट? कैलनेक्सिन, देयर आर टू प्रोटीन्स बेसिकली, कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिक्यूलिन. कैल स्टैंड्स फॉर, these are calcium dependent. ओके, कैल्शियम डिपेंडेंट है. अभी ये कैलनेक्सिन के साथ अटैच हुआ when there is only one glucose, right? अभी ग्लूकोसिडेज एंजाइम ने क्या किया? जो रिमेनिंग ग्लूकोज था, वन ग्लूकोज, उसको भी रिलीज किया. तो दिस इज नॉट हैविंग अ ग्लूकोज. इसमें सिर्फ 2 एनर्जी है एंड 9 मैनोज, राइट? अभी ये प्रॉपरली फोल्डेड नहीं है प्रोटीन. यू कैन सी हियर इनकम्प्लीटली फोल्डेड के केस में ये चलता है. ओके, अभी इस प्रोटीन का, इट इज हैविंग दिस वन ऑलिगोसैकेराइड, इसका आइदर प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्जन होगा, राइट? मतलब प्रॉपर फोल्डिंग होगी इसकी, एंड देन दिस विल एग्जिट फ्रॉम द ईआर. ओके, ईआर से एग्जिट करेगा. इफ नॉट दैट, अगर प्रॉपरली फोल्डिंग नहीं हुई, then the same cycle will continue till it gets properly folded. Okay, see what is the cycle? Glucosal transferase enzyme. Glucosal transferase क्या करेगा? फिर से UDP से ग्लूकोज ऐड करेगा. Again this will get bind to this calnexin, right? So basically there are 3 stages of protein: unfolded, incompletely folded and normally folded. Okay, so unfolded से protein incompletely folded है. How this is recognized? By glucose streaming and one molecule of glucose, calnexin, जो इसमें important role है इसका, to recognize improperly folded protein, right? Because of this one molecule of glucose. अभी glucosidase ने ये भी molecule हटाया, then this protein will get properly folded or the cycle will continue again by glucosal transferase. Got it? So these enzymes are very important, right? Let's see what are written. Same role of N-linked glycosylation in the ER protein folding. The ER membrane bound chaperone protein calnexin bind to incompletely folded protein, right? जो मैंने बताया वही लिखा है, कुछ डिफरेंट होगा, that I will explain. Containing one terminal glucose on N-linked oligosaccharides, trapping the protein in the ER. मतलब ये प्रोटीन ER में ही पकड़ के रखता है, right? This will not move the protein ahead, right? जैसे कि ER से Golgi, then it goes further, right ना? So if this is not properly folded, this will retain in the ER only by this binding protein, chaperone proteins. Removal of the terminal glucose by glucosidase releases the protein from calnexin. Okay, calnexin से release होता है protein after removal of terminal glucose. A glucosal transferase is the crucial enzyme that determines whether the protein is properly folded or not. Okay, ये enzyme glucosal transferase important है, protein को recognize करता है whether it is properly folded or not folded. If the protein is still incompletely folded, the enzyme transfer a new glucose from UDP glucose,
राइट, जो हमने देखा ग्लूकोज ऐड करेगा फिर से टू द एनिलिन ऑलिगोसैकेराइड, रिनीविंग द प्रोटीन अफिनिटी फॉर कैलनेक्सिन एंड रिटेनिंग इट इन द ईआर, मतलब उसे ईआर में ही रखेगा, कैलनेक्सिन के साथ बाउंड होगी फिर से. द साइकिल रिपीट्स until the protein has folded completely, as I said. Reticulum, see, this also function similarly, except that it is a soluble ER resident protein, right? कैलनेक्सिन है membrane bound है, membrane inserted है, but जो reticulum है that is soluble. Okay, just remember these differences. बाकी function same है. Another ER chaperone, ERP57, which is not shown, collaborates with calnexin and reticulum in retaining an incompletely folded protein. Same role है उसका भी, protein को retain करना in the ER. ERP57 recognizes free sulfahydryl group, which are sign of incomplete disulfide bond formation. Right, disulfide bond का formation नहीं हुआ है, sulfhydryl bonds, sulfhydryl groups वैसे के वैसे हैं. There is no disulfide bond formation. So that who recognizes that? Basically ERP57. Okay, the longer it protein spans in the cycle without folding correctly, the more likely it is that ER resident mannose enzyme not shown remove the terminal mannose from the N-linked oligosaccharide. मतलब ER में अगर प्रोटीन ज़्यादा देर ऐसे स्टे किया उसने ER में ही, then mannose भी रिलीज होते हैं. Okay, mannose also release होते हैं by the enzyme mannosidase. Right, so terminal mannose also get out. The trim oligosaccharide with reduced mannose is recognized by other ER lectins that route the polypeptide for degradation. तो अगर mannose भी इसका रिलीज हुआ है, तो mannose का नंबर भी कम हुआ, then what happens? This protein is recognized by lectins and this is marked for degradation. Means there is no functional protein, right? इसको रख के कुछ फायदा नहीं है, हमें इसे डिग्रेड करना होगा. Okay, so thus only protein that fold properly जो fold होते हैं and exit the ER avoid trimming by mannosidases and escape degradation, right? मतलब अगर properly folded हुई प्रोटीन की and वो exit हुई ER के बाहर, then the mannosidase cannot act on it. Okay, and degradation नहीं होगा उसका. So this is a fast process actually, which is one way. प्रोटीन properly fold होनी चाहिए ER में, ER से बाहर जाने के लिए, otherwise it will stay in the ER. उसका ग्लूकोज निकल गया है, राइट, फिर से ऐड हो सकता है. otherwise if it stays for long time, mannose will also get removed and the protein will be degraded, right? So this is how protein is degraded basically. You can see here, यहाँ पे अभी misfolded protein है, right, which is recognized by lectin. तो अभी डिस्कस किया हमने, उसका मैनोज भी रिलीज हुआ है, right, reduced number of mannose. So this is recognized by chaperone, right, recognition, and then this is then targeted for going outside, मतलब इल्यूमिन से साइटोसोल में जाएगी प्रोटीन. ओके, यू कैन सी यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलोकेटर कॉम्प्लेक्स है which is associated with E3 ubiquitin ligase on one side, right? ट्रांसलोकेटर के साथ E3 ubiquitin ligase है. अभी ये प्रोटीन को ubiquitin टैग करेगा, right? ubiquitin molecules are added, right? You can see here, मैं मार्क कर रहा हूँ properly, do note. Then there is a protein AAA ATPase. Okay, you can see ring like structure है, green color का ring like structure, hexameric है. I will write this here, hexameric. Okay, hexameric and ring like, green color का जो हमें दिख रहा है, this one.
ओके, so this uses ATP molecule, एनर्जी चाहिए, राइट, इस पूरे प्रोसेस को। अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट का पूरा जो ग्लाइकोसाइलेटेड पार्ट था, पूरा यहाँ पे रिमूव होगा। दिस इज एंजाइम एन ग्लाइकेनेज। एन ग्लाइकेनेज मीन्स व्हाट, जो एन ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है उसको पूरा ये रिमूव कर देगा। ओके, दिस होल यूनिट इज रिमूव्ड एंड देन इस पे अभी पॉलीयूबिक्विटीन चेन अटैच है ऑन दिस प्रोटीन, यू कैन सी हियर। देन इसका होगा प्रोटियोजोम के अंदर डिग्रेडेशन, राइट, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। Got it? The export and degradation of misfolded ER protein. Misfolded soluble protein in the ER lumen are recognized and targeted by a translocator complex in the ER membrane. They first interact in the ER lumen with chaperones, disulfide isomerases, and lectins. Right? As we saw, the chaperones maintain the misfolded protein in an unfolded conformation and prevent the aggregation. Right? जो chaperone है उसको मिसफोल्डेड प्रोटीन में ही रखेंगे, राइट, अनफोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट द एग्रीगेशन, बेसिकली क्लस्टर्स नहीं फॉर्म होने देते। डाइसल्फाइड आइसोमरेजेस रेड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फुल्ली अनफोल्ड द प्रोटीन, राइट। डाइसल्फाइड आइसोमरेजेस डाइसल्फाइड बॉन्ड को पूरी तरह से ओपन करेगा, राइट। द लेक्टिन selectively recognize trim end-linked oligosaccharide that are generated when a protein spends too long in the ER. ये हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में। नंबर ऑफ मैनोज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, reduced हुआ, then it is recognized by lectins. The lectins have binding site on membrane embedded protein translocator built around the E3 ubiquitin ligase. lectin का binding site है। The unfolded protein is then exported into the cytosol through translocator. The E3 ubiquitin ligase ubiquitinates the unfolded protein. Okay, ubiquitination होगा protein का as it emerges on the cytosolic side of the translocator. The ubiquitin prevents backsliding of the protein. Okay, see, मतलब ubiquitin tag अगर दिया प्रोटीन को, then ये फिर से अंदर नहीं जा सकते ल्यूमेन में, साइटोसोल में ही रहेंगे, राइट। सो वन साइडेड पाथवे चलेगा यहाँ पे into the ER and provides a molecular hands for AAA ATPase that completes the extraction reaction. The unfolded protein is then deglycosylated. Okay, as I said, जो glycosylation chain है पूरा रिलीज होगा and degraded in proteasome. Misfolded membrane protein follow a similar pathway but are thought to engage the translocator sideways within the lipid bilayer. Sideways से engage करता है ट्रांसलोकेटर को misfolded protein, misfolded membrane protein. Okay, so this misfolded membrane protein, क्या difference है that you should remember, note down. Multiple translocator complexes containing different E3 ubiquitin ligases reside in the ER. मतलब E3 ubiquitin ligase के बहुत सारे different parts types है, right, ER में. They are thought to handle different subsets of protein that are misfolded in different ways. मतलब misfolded protein के साथ interact करते हैं different ways, but the mechanism is same of protein degradation. Now this is the unfolded protein response. Unfolded protein response. Okay, मतलब यहाँ पे ना signaling चलता है, right, signaling. There are sensors which recognize the misfolded protein. Here, 3 sensors for misfolded protein. So these are the 3 components: IRE1, PERK and ATF6. Okay, तीनों का रोल different है, but जो signaling है मेन उसका रिजल्ट एक ही है. What is the result? Activation of genes to increase protein folding capacity. मतलब प्रोटीन फोल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, राइट, एट द एंड.
ऑफ ईआर एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन apparatus. ओके, मतलब जीन एक्टिवेशन करना है ऐसे जीन्स जो प्रोटीन फोल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे एज वेल एज प्रोटीन डिग्रेडेशन apparatus को भी इंक्रीज करेंगे ऐसे जीन्स. गॉट इट. तो फर्स्ट IRE1 क्या करेगा, अभी काइनेज डोमेन से फॉस्फोराइलेशन होगा, राइट. देन द ये जो है दैट इज राइबोन्यूक्लियस डोमेन. अभी राइबोन्यूक्लियस डोमेन mRNA को स्प्लिट करेगा. रेगुलेटेड mRNA स्प्लिसिंग इनिशियल ट्रांसलेशन ऑफ, मतलब जीन का ट्रांसलेशन होगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन 1. ओके, राइबोन्यूक्लियस मींस व्हाट, आरएनए पर एक्ट करेगा, राइट. तो बेसिकली mRNA है. तो mRNA splicing is regulated by this IRE1 if activated. The next pathway PERK, इसका भी फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ. वी कैन सी ये फॉस्फेट्स है, राइट, IRE1 पर भी. तो फॉस्फोराइलेशन इनएक्टिवेट्स ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर. अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर का इनएक्टिवेशन हो, राइट. इनएक्टिवेशन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ प्रोटीन एंटरिंग द ईआर. मतलब ईआर में जो प्रोटीन्स आ रहे हैं उसका हुआ वहाँ पे रिडक्शन, राइट. ईआर में प्रोटीन नहीं आ पाएगी एंड देयर विल बी सिलेक्टिव ट्रांसलेशन ऑफ अ जीन, दैट इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन 2. ओके, अभी ATF6 ये क्या करता है, प्रोटीएज को एक्टिव करता है, प्रोटीएज. अब ये प्रोटीएज ATF6 को ही क्लीव करेगा, राइट, कट करेगा बेसिकली. इफ आई ड्रॉ दिस इज कटिंग हियर प्रोटीएज एंड यहाँ पे ATF6 ही सेपरेट हुआ. ओके, सी रेगुलेटेड प्रोटियोलिसिस इन Golgi apparatus releases, right. This is in Golgi apparatus. ट्रांसलेशन रेगुलेटेड प्रोटीन 3 यहाँ पे बन रही है एंड एंड रिजल्ट को हमने दिखाई. So what is written here, 3 parallel intracellular signaling pathways sense misfolded protein in the ER lumen and lead to the activation of transcription in the nucleus, right. Each pathway begins with an ER resident sensor of misfolded protein. When these sensors are activated, they initiate different downstream signaling pathways, right. Downstream signaling pathways different है of every component, although the downstream mechanism are very different from each other, right. Different type mechanism, but all of them culminate with the production of an active transcription factor, right. मतलब सब एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का प्रोडक्शन कर रहे हैं. The overlapping targets are overlapping of the transcription factor produce gene products that improve the protein processing capacity of the ER and increase protein degradation capacity of the cell. Got it? तो प्रोटीन डिग्रेडेशन को स्पीड अप करना एंड प्रोटीन फोल्डिंग को भी स्पीड अप करना, राइट. आइदर दिस और आइदर दिस बेस्ड ऑन द रिजल्ट वी वांट, हो सकता है. ओके, यहाँ पे IRE1 का तो डिटेल में बताया अभी. तो यू कैन सी अरे मिसफोल्डेड प्रोटीन है, बट मिसफोल्डेड प्रोटीन बाउंड टू चेफरॉन. यू कैन सी यहाँ पे चेफरॉन है BIP. दिस इज इन द ER lumen. अभी क्या हुआ, IRE1 मोनोमर है यहाँ पे, इसके साथ भी ये चेफरॉन बाइंड है. यू कैन सी हियर. अभी व्हेन द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर इंक्रीज्ड, ये जो BIP है चेफरॉन रिलीज हो जाता है, राइट. एंड देन दिस IRE1 gets bound to misfolded protein. ओके, यहाँ पे सेपरेटेड है डोमेन्स, यहाँ पे वो एक साथ हुआ, डाइमराइजेशन हुआ. बेसिकली दिस इज मोनोमर ना, दिस इज अ डाइमर. डाइमर इंटरैक्टिंग विद मिसफोल्डेड प्रोटीन. तो अभी काइनेज डोमेन तो फॉस्फोराइलेशन करेगा, राइट. आफ्टर फॉस्फोराइलेशन दिस डोमेन राइबोन्यूक्लियर डोमेन गेट एक्टिवेटेड. राइबोन्यूक्लियर डोमेन का काम क्या है, इंट्रॉन को रिमूव करेगा, राइट. स्प्लिसिंग रेगुलेट करेगा बेसिकली.
दिस इज अ प्री mRNA. सी अब इंट्रॉन को यहाँ पे रिलीज किया, देन दिस mRNA विल गेट जॉइंड द टू एक्सॉन्स, दिस विल प्रोड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर. अभी ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर शेफरॉन जीन को एक्टिवेट करेगा, बेसिकली ट्रांसलेशन करेगा ऑफ शेफरॉन. हियर शेफरॉन mRNA एंड आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस दिस BIP जो शेफरॉन है बन रहा है रेड कलर का, which is the same chaperone that is interacting with the misfolded protein. So this is how the signaling is done, right? Here, the IRE1 limb of the unfolded protein response. IRE1 का डिटेल में बताया है. Regulated RNA splicing is key regulatory switch in the unfolded protein response pathway initiated by IRE1 during normal condition. Just note carefully what I am reading, okay, and understand. Relate it with the picture. IRE1 is maintained in an inactive state by its association with ER luminal chaperone BIP. Right, मतलब ये inactive state है, which is bound to BIP. Elevated levels of misfolded protein. As I said, when misfolded proteins are increased, ERE1 gets activated by combination of two mechanisms. First, BIP dissociates from IRE1 to bind and protect misfolded protein from aggregation, right? misfolded protein का aggregation होने से prevent करता है. Second, misfolded protein bind to the luminal domain of IRE1, facilitating the formation of IRE1 oligomers, right? Oligomers का formation हो रहा है यहाँ पे. First monomer था inactivated state में. The oligomerized IRE1 phosphorylates itself on the cytosolic side, right? Phosphorylation हुआ, kinase domain है, activating ribonucleus domain, right? उसके बाद ribonucleus domain activate हुआ. The activated ribonucleus catalyzes the splicing of a free mRNA, okay, that codes for a transcription factor that ultimately activates numerous genes in the nucleus, including those coding for the chaperones. मतलब chaperones का ही expression वहाँ पे increase हो रहा है. Elevated chaperones help reduce the level of misfolded protein, right ना, उससे ही misfolded protein का level कम होगा, reduce होगा in the ER lumen, eventually turning off IRE1 signaling, right? इससे ही तो सिग्नल टर्न ऑफ होगा, सिग्नलिंग का जो पूरा पाथवे था वो इसी से ही ऑफ होगा. Okay, so pathway is initiated by the misfolded proteins when they are high, and pathway ऑफ कब होगा, जब chaperones BIP I will write increased है तो जो सिग्नलिंग है ऑफ होगा. Got it? This is nothing, just a synthesis of phospholipids, right? ER membrane पर synthesis होता है phospholipids का. Let's read what is written. As illustrated, fatty acids delivered to the ER by cytosolic fatty acid binding protein are linked to glycerol 3-phosphate to produce phosphatidic acid. Okay, phosphatidic acid बनता है first, which serve as a precursor to make other phospholipids that differ in the structures of the polar head groups. तो polar head group different होते हैं, right? How this is formed? Let's see. ये fatty acid binding protein है, तो fatty acid को लेके आ रहा है यहाँ पे lipid bilayer पर. Then there is a CoA is used by enzyme acyl CoA ligase. यहाँ पे CoA ऐड हुआ, see. And then acyl transferase से glycerol 3-phosphate ऐड हो रहा है, right? To CoA getting released. Glycerol 3-phosphate ऐड हुआ. This is whole molecule phosphatidic acid. Important है. अभी जो हेड ग्रुप है इसमें एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होगा, राइट? एंड द डिफरेंट फॉस्फोलिपिड विल फॉर्म लाइक फॉस्फेटिडाइलकोलिन, इथेनोलामाइड, फॉस्फेटाइलसीरीन, फॉस्फेटाइलइनोसिटोल. ये हमने देखा है व्हेन वी डिस्कस ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन
स्टार्टिंग में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, राइट, लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड लिपिड्स। नाउ यू कैन सी यार यहाँ पे असिमेट्री में इम्पोर्टेंट है, राइट। ये पिक्चर में क्या दिया है, इन द ईआर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फॉस्फोलिपिड का, राइट। सो हियर द एंजाइम इज स्क्रैम्बलेज। Phospholipid synthesis adds to cytosolic half of the bilayer. Asymmetric growth of the bilayer. Right, पहले asymmetric growth है, मतलब some specific phospholipids are present on one leaflet only and not the other. मतलब एक leaflet में ही रेड कलर के ज़्यादा है C and not in other, ऐसा. Now what scramblage does? Scramblage catalyzes transfer of random phospholipid from one monolayer to another. मतलब ये randomly phospholipid को मूव करते हैं from one leaflet to another leaflet, and this gives rise to symmetric growth of bilayer. Okay, symmetric growth. Now this B picture is of Golgi and other cell membrane. You can see phospholipid distribution is asymmetric, right. यहाँ पे symmetric है, मतलब equal we can say on the both the leaflets. यहाँ पे अलग enzymes है, lipase, flopase. ये भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक्स में डिस्कस किया है, right. But when we discuss the organelles, we have to see this again. तो अभी क्या हुआ इसमें, न्यू मेम्ब्रेन, डिलीवरी ऑफ न्यू मेम्ब्रेन फ्रॉम ईआर. ओके, मेम्ब्रेन दिया. फ्लिपेज क्या कहते हैं, फ्लिपेज, फ्लिपेज में आई है फ्लिप, और एक एंजाइम है फ्लॉपेज. तो फ्लिप मीन्स आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट, राइट, मतलब अंदर के साइड पर कुछ स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड मूव करेगा, राइट. सी फ्लिपेज इज कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड टू द अपोजिट मोनोलेयर. ओके, सो यू कैन सी हियर रेड जो है ऊपर है और येलो है ना ज़्यादा नीचे है. तो दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक बाइलेयर. असिमेट्री है यहाँ पे. द रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर्स इन लिपिड बाइलेयर सिंथेसिस. Translocators, basically 3 translocators. I will write here so that you can check the video. हमने डिस्कस किया है इस पर. just you can revise from your lipase, flopase and scramblase, right. These are 3 protein translocators, transporters basically, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स को मूव करते हैं. प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स नहीं है, फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर्स हैं, बिकॉज दे आर responsible for the movement of phospholipids from one leaflet to another leaflet, right. So because new lipid molecules are added only to the cytosolic half of the ER membrane bilayer, and lipid molecule do not flip spontaneously from one monolayer to other, a transmembrane phospholipid translocator called a scramblase is required to transfer lipid molecule from the cytosolic half to the luminal half so that the membrane grows as a bilayer. Okay, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स ऐड कहाँ पर होते हैं, साइटोसोलिक साइड पर ही ऐड होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस. so they should get move on the luminal side as well, right. so ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता. okay, अपने आप नहीं होते मूव फॉस्फोलिपिड्स, they require a translocator. so your scramblase का रोल है in the ER specifically. the scramblase is not specific, right. specific नहीं है for a particular phospholipid, randomly move करते हैं as we saw head groups, and therefore equilibrates the different phospholipid between the two monolayers. Scramblase do not need energy as well to catalyze phospholipid flipping, and probably function by providing a hydrophobic path for passive movement of the phospholipid head group
through the hydrophobic interior of the membrane. राइट, मतलब स्क्रैम्बलेज को एनर्जी नहीं चाहिए, लिपेज एंड फ्लोपेज को एनर्जी लगती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. Now the big picture, the membrane of the Golgi apparatus, cell surface and other compartments of the secretory and endocytic pathway are asymmetric. When new membrane is delivered via transport vesicle, the incoming lipid must be segregated to appropriate side of the lipid bilayer to maintain its asymmetry. Right, asymmetry को maintain रखना important है. That is done by flippage. This is accomplished by the enzyme called flippases, which move selective phospholipid unidirectionally from one side of the bilayer to the other. Flippase typically couple the transport of the substrate, the phospholipid hair groups, to ATP, right? ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए to transport flippase को, ATP hydrolysis, and are therefore considered active transporters, right? So these are active because they require ATP, and this is scramblase is passive, no ATP required. Got it? अभी जो ER है ना, that also contacts with other membranes, okay, membrane of other organelles. So basically that is called contact sites, right? Contact sites. यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का, ये जो रेड कलर का दिख रहा है कॉन्टैक्ट साइट्स. Let's see the special relationship between the ER and several organelles with a mouse neuron. Okay, मतलब ये ER है ना, अदर ऑर्गेनल के साथ भी कांटेक्ट करता है. There is interaction between ER and other organelles through these contact sites. So a section of the cell body of a neuron in the mouse brain was analyzed by a focused ion beam scanning electron microscopy. The three-dimensional position of the major organelles reconstructed from the serial electron microscopy images and shown in different colors. The ER जो है येलो कलर में दिख रहा है. In the first picture you can see ER yellow makes close contacts with all major organelles and the plasma membrane. Okay, मतलब ऑर्गेनल के साथ भी कांटेक्ट करता है as well as प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी इंटरेक्शन करता है, right? So there are contact sites basically. The mitochondria, you can see green, जो mitochondria है green में दिखा है, from the reconstruction are shown with the areas that contact the ER, that is red. See, ये जो green है mitochondria and ER red color में दिखाया है, there is contact between those organelles. So the last picture which is very important about contact sites in detail, right? तो इस contact site में क्या होता है, लिपिड का ट्रांसफर होता है. Okay, see the transfer of lipid at organelle contact site. Proteins anchored to two different membranes, the ER and mitochondrial, in the depicted example, interact with each other to hold the membranes 10 to 30 nanometer apart. Okay, मतलब 10 to 30 nanometer distance रखने के लिए ऐसे होल्डिंग करते हैं. Right, there are proteins, you can see here, membranes को होल्ड पकड़ के रखते हैं. Specialized lipid transfer protein are recruited to these contact sites, or in some cases are part of the junction complex. These transfer proteins have cavities that can bind lipids and facilitate the movement from one membrane to the other. Okay, the structure of one such transfer protein is shown in the lipid-like molecule down inside the cavity. Abhi you can see here, ये junction complex है. This is a protein of ER membrane. This is a mitochondrial outer membrane. अभी ये junction complex यहाँ पे form हुआ
which is holding the two membranes together, right? अभी यहाँ पे और प्रोटीन्स हैं, लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन. सी दिस यू कैन सी, दिस इज फ्रॉम द ईआर ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर का माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट है. अभी जो कैविटी बोल रहे हैं ना, तो यू कैन सी यार इसमें गैप है अंदर, एंड ये जो पार्ट है ना, दिस आर लिपिड्स which I have circled. The lipids है. So these lipids are moving from one organelle to another, right? So lipid यहाँ पे move हो रहे हैं. And this is again a picture. Structure दिखाया है. इसमें again ये lipids है, right? And these are the two proteins जो lipids को move करेंगे. इसके अंदर cavity है. They have shown structure. So this is of the contact sites, right, between ER and other organelles. Basically इसमें mitochondrial outer membrane दिखाया है. Okay, so we have completed with the ER. From the next video we will be seeing the Golgi, right? That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.